Faisa, am I audible? After a very long time, Faisa. Shaviz अपना टाइम से आए India for a week and wasn't able to attend the regular. हाँ, बट आई थिंक आप शायद ही 2 महीने बाद आ रही हैं, राइट? इट्स नॉट लाइक यू हैव बीन प्रेजेंट इन द लास्ट वीक, है ना? सो आर यू इन टच विद द टीम एंड आर यू इन टच विद द कंटेंट दैट आई एम डूइंग? आर यू वाचिंग द रिकॉर्डिंग? Have you been watching the recording? Like, do you know what happened in the last lecture? You have started to watch. अच्छा, ठीक है, ठीक है. Okay, fine. I will talk with you. Okay, I will talk with you. Fine. So, guys, in the last lecture, we saw that there are two types of ligand: strong field ligand and weak field ligand. Right? Now, tell me in the chat, please, guys, which type of ligand will show pairing? Pairing is shown by, या फिर pairing occurs when dash ligands are present, है ना? Are present. SFL या WFL? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में होता है पेयरिंग या फिर वीक फील्ड लिगेंड में पेयरिंग होती है? राइट इन द चैट प्लीज गाइस. यू कैन यूज द नोट्स दैट यू हैव रिटन और आप बताइएगा पेयरिंग कहाँ पे होती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड में या फिर वीक फील्ड में, इन द चैट प्लीज. एंड ऑल्सो सेंड दिस आंसर्स टू सालिम. शाहिद करेक्ट, रबा करेक्ट, ओके मतीहा, ओके शावेज, नाइस, ओ गुड, ओके फाइन फाइन. सो यू हैव बीन watching the, okay, you have been in touch with the content, है ना, चाहे कहीं से भी. ओके, दैट्स गुड. शावेज, आई डोंट नो आप पे कैसे गलत हुआ. यू शुड हैव रेड, है ना? आप या तो रिवाइज करके आते. हाँ, दो ही ऑप्शन था, ट्रू या फॉल्स वाला. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, राइट? एंड वी वर डूइंग समथिंग रिगार्डिंग द डी इलेक्ट्रॉन्स, कि अगर एक डी इलेक्ट्रॉन है तो कहाँ कैसे कैसे होगा, दो में, तीन में, चार में. सो आई थिंक वी वर डन टिल 4. विल स्टार्ट डूइंग द सेम थिंग with 5 and other electrons, right? Now, when we have D5, please here, guys, don't write anything, please see. When we have D5 and strong field ligand is there, so pairing will still take place. So it will be like this. And for D5, the strong field ligand will have a electronic configuration of T2G5 and Eg will be still 0. The number of unpaired electron will decrease to 1. When we are having weak field, then in weak field pairing does not happen. So it will go here and the electronic configuration will be T2G3 and Eg2. And this will be having 5 unpaired electron. Okay? Now when we move to D6, D6 will be T2G6, Eg0. Electron is 0. And when we talk about D6 in weak field, so now again it will come back to T2G. अब पेयरिंग देखिए, बोलेगा सर यहाँ पेयरिंग क्यों रही है? बिकॉज दैट इज द ओनली ऑप्शन अवेलेबल, है ना? तो ये ध्यान रखिएगा, आपके पास अवेलेबल ऑप्शन सिर्फ क्या है, यहीं तक है ना. दैट यू कैन नॉट गो, यू डोंट हैव एनी अदर ऑर्बिटल्स लेफ्ट, सो यू हैव टू एनी हाउ डू द पेयरिंग नाउ. नाउ वीक फील्ड लिगेंड में आपके पास जो कॉन्फ़िगरेशन होगा दैट विल बी T2G is now 4 and Eg is still 2. The unpaired electron is decreased to 4. And in D7 what will happen? Now अब D7 में पेयरिंग नहीं होगी, अब D7 में इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा. We'll have electron here and the electronic configuration will be T2G is 6 and Eg is 1. Unpaired electron is 1 and here the electron will come here, so you will have T2G how much, 5 and Eg is still 2. Unpaired electron is equal to 3. In D7 one electron will go here for strong field ligand
और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी D8 के लिए इट विल बी T2G6 and EG is going to be 2 now. Unpaired electron is 2. Here the electronic configuration will be T2G6 and EG2. ठीक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन इट इज 2. अब यहां से देखिएगा, सी हियर गाइस, 1 2 और 3 में, D3 हमने नहीं लिखा है लेकिन 1 2 3 में, और फिर उसके बाद D8 से D9 और D10 एवरीथिंग विल बी सेम. अब देखिए इन D9 व्हाट विल हैपन, one electron will move to EG, electronic configuration will be T2G6 EG3. Unpaired electron is 1. Here the electronic configuration will be T2G6 EG3 because एक इलेक्ट्रॉन अब यहीं पे आ सकता है, there is no other orbital left. Unpaired electron is 1. और फिर आएगा लास्ट में D10. Here आपके पास T2G6 and EG4, unpaired electron is 0. Same thing है ना, and unpaired electron is 0. All of you got this? Yes or no? Please tell me. तो आपको बस चेक कहाँ पे कहाँ से कहाँ तक करना है, आपको चेक करना है D4 से लेके D7 तक. ठीक है, सिर्फ D4 से लेके D7 तक आपको चेक करना है. उससे पहले whether it is strong field ligand or weak field ligand, this T2G configuration will be same. And similarly D8 9 10 में भी आपको कुछ चेक नहीं करना पड़ेगा, it will be same. Please write this down, raise your hand once you are done. Sir, Tell me. sir, for D8, why is it T2G EG2? T2G6 and EG2 Yes. एक एक करके देखते हैं ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड में पहले देख लेते हैं. ठीक है, दिस इज स्ट्रॉन्ग फील्ड. स्ट्रॉन्ग फील्ड में व्हाट विल हैपन, पेयरिंग विल अकर, यस और नो, टेल मी. Yes, sir. पेयरिंग होगी, ठीक है. तो पहले ए कितने इलेक्ट्रॉन डालने हैं, D8 राइट, 8 इलेक्ट्रॉन डालने हैं. ओके, सो 1 2 3 4 5 6, करेक्ट है. Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद 7 8, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसे होना चाहिए, No, no, it shouldn't be like this, right? है ना, इट विल बी लाइक दिस ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में. Yes, sir. ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड में देख लें हम. ठीक है, यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी. अगेन D8, सो 1 2 1 2 3, सो 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8. गॉट Yeah. इट मतिहा? ओके, Yes, sir. सो इवन दो दोनों केसेस में डिफरेंट तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं, बट एट द एंड वी आर गेटिंग द सेम रिजल्ट, दैट इज इन बोथ द केसेस वी हैव T2G6 and EG is 2. करेक्ट. Yes, sir. D3 लिख लीजिएगा गाइस, प्लीज राइट द D3 आल्सो. Sir, it is T2G6 EG2, right, for D8? हाँ, क्या हो गया. Uh, so ये But यहाँ पे T2G2 लिखा हुआ है. अच्छा, हाँ बताइए. no, that's it, sir. दैट्स इट ना, ये 2 लिखा हुआ था, वो मिस्टेक. ठीक, दैट वाज जस्ट माय राइटिंग मिस्टेक. Sir, जी, यस रबा, टेल मी. D1, D2, D3 is not there. D3 है, लिखना है, वो आपको खुद से लिखिए. एक Okay, हमने sir. छोड़ दिया था, लास्ट ही क्लास में छोड़ा था. Okay, sir. अभी तो D4 से स्टार्ट किया हमने. लिख लेंगे ना. इट विल बी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए आप ऐसे इलेक्ट्रॉन फिल करके लिखिएगा, ठीक है ना, ऑल ऑफ यू गाइस ऐसे इलेक्ट्रॉन फिल करके लिखिएगा. यू गाइस शुड ड्रॉ दिस पार्ट विद पेंसिल, है ना, ये वाला जो पार्ट है पूरा ना, इधर वाला स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड वाला, उसमें पेंसिल से ड्रॉ करके उसको बार बार इरेज करके आप लोग प्रैक्टिस कीजिए.
Please raise your hand once you're done. Sir, can you again explain how we count unpaired electrons? जितना अनपेड होता है उसको अनपेड बोलते हैं, और क्या। जैसे ये अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है Okay. दो, ठीक है, ऐसे बना लीजिएगा। देखिए, आई डोंट वांट टू, मतलब वो रश नहीं कर रहे हम। देखिए, बताइए कौन सा केस में, बताइए, टेल मी अ केस। Um. Okay, sir. TG1 and EG T2G1 and EG0. T2G मतलब D1 केस में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, Yes, sir. तो एक इलेक्ट्रॉन है T2G1 में, तो एक अनपेड हो गया। Okay, sir. Done. ठीक है, अब जैसे एक दो तीन हो गए, तो चौथा आएगा तो कितने अनपेड हो गए, 2. है ना। दैट्स इट। Guys, please raise your hand quickly. Okay, there are few people. Fahad, Rabah, Shahid, waiting for you guys. Fahad, Rabah, and Shahid. Rabah, just waiting for you now. देखिए गाइस, सम पीपल, वो लोग ना बहुत लेट आ रहे हैं आजकल। 10-10 मिनट लेट नहीं चलेगा ना। 5 मिनट का टाइम फिर भी ठीक है यार, आप लोग 10 मिनट लेट मत क्या कीजिए, ठीक है। अब होना तो ये चाहिए कि आप लोग क्लास में पहले से आके रहे। रबा कहाँ तक हुआ है आपका। यस रबा। Sir, हाँ शावेज। sir, when the ligand approaches, so the D shell divides into two subshells. So the first electron is in T2G हाँ, लोअर वाले में जाएगा सबसे पहले, है ना। ईजी ऊपर है ना, और T2G नीचे है। because of low energy. बिकॉज ऑफ लोअर एनर्जी, है ना। ईच एंड एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इट वांट टू अटेन द लोअर एनर्जी पॉसिबल। ठीक है शावेज, है ना। Okay, sir. चलिए गाइस, राइट, नेक्स्ट टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग। दिस इज बी। ऑक्टेटल हम लोगों ने देख लिया है। प्लीज राइट टेट्राहेड्रल splitting. Please write this with me. In tetrahedral splitting, या फिर in tetrahedral complex, the ligands approach approach hmm, approach in between, approach the central metal atom in between the axis. Therefore, the non-axial orbitals, therefore the non-axial orbitals are in the direction of the non-axial orbitals are in the direction of ligands. ठीक है, and their energy increases.
तो नॉन एक्सियल वाले है ना. सो नॉन एक्सियल वाले कौन कौन से हैं? वी हैव डी एक्स वाई, वी हैव डी वाई जेड एंड वी हैव डी एक्स जेड. और इनको बोलते हैं T2 ऑर्बिटल. ठीक है. अब कौन आ रहा है भाई इतना लेट? तारीफ, ओ माय गॉड, बताओ. हाँ, जी नहीं आएगा. T2 जी नहीं आएगा, वो हम Sir, बता देंगे क्यों नहीं है. हाँ हाँ सर. so this orbital's energy will be more. हाँ, एनर्जी विल बी हायर ना, इंक्रीज इन एनर्जी. ठीक है. then you write the axial d orbital, the axial d orbital will experience decrease in energy. है ना, क्योंकि उसकी तरफ लिगेंड ओरिएंटेड नहीं है. एंड व्हाट आर द एक्सियल? we have dx square minus y square and we have dz square. This is the e orbitals. We have t2 set and then we have e set. Write this down. Okay, I hope you have written this down. Now you will draw this very similar to what we have done in the octahedral structure, which we have not done. Raise your hand if you're done, guys. जिनका हो गया है प्लीज रेज योर हैंड. अच्छा, डन. ठीक ठीक ठीक, ओके. सी हियर, ध्यान से देखिएगा. अगेन वी हैव द सेम थिंग. वी हैव द d orbitals which are in their free state. यहाँ पे इनके पास कोई छिड़काई नहीं हो रहा. There is no ligand approaching, so they are in free state. Then they start seeing that ligands are approaching. So what happens? The average energy of the d orbitals, it increases because of the electronic repulsion in spherical field. After that, when the ligands approach more closely and when the ligands are quite near, the central metal atom, it sees that, or rather it experiences a increase in the repulsion with the non-axial d orbital. That is why dxy, dyz, and dxz, they have an increase in energy. But the these two, the axial d orbital, they experience a decrease in energy because the ligands are not approaching in their direction. उनको उतनी repulsion feel नहीं होती. That is why there is a decrease. And here we are having del T. Del is the difference of the energy between the two sets. And what are these two sets? This is the T2 set and this is the E set. ठीक है. These are T2 orbital आप बोल सकते हैं, orbitals. And this is the E orbital. ठीक है, E set of orbitals. ठीक है. So the difference between these two is the delta T, that is the crystal field splitting energy because of tetrahedral complex. And the T2 orbitals are 2 by 5 del T above the barycenter, and the E orbitals are 3 by 5 del T below the barycenter. ठीक है. It's very similar to the octahedral field. Just यहाँ पे reverse हो चुका है ना. Inversion of the orbitals is happening here. ठीक है. जो आपके पास जिसकी एनर्जी ज्यादा हो रही थी उसकी कम हो गई, जिसकी कम हो रही थी उसकी ज्यादा हो गई. ठीक है. सो प्लीज write this down, draw this whole thing and raise your hand once you are done.
Please raise your hand once you're done writing. ये रबा and पैसा. Guys, please raise your hand if you're done. Matiha, Tarif, Shahid, Shavez, Fahad. See here. ठीक है. Since all of you are done, देखिए ध्यान से. Now when we have 4 ligands ना, तो ML4 में दो तरह के चीजें हो सकती हैं, right? So please see the case of ML4. In ML4 you can either have a tetrahedral structure or you can have square plane. ठीक है. इसको डिसाइड करने के लिए देखिए बहुत ही आसान है, ध्यान दीजिएगा. इफ यू आर हैविंग, पहले आप देखिएगा डी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं. ठीक है. So, अगर आपके पास D0 से लेकर D7 तक का केस है, then in all of these cases you will have tetrahedral. That is sp3 hybridization होगा. ठीक है. और अगर आपके पास D10 है, that means the D structure is having 10 electrons, then in this case also you will be having the tetrahedral structure and the hybridization will be sp3. The only option of square planar comes if you have D8 or D9, है ना. तो D8 और 9 में you have to check whether it is tetrahedral या square planar. ठीक है. तो कैसे चेक करेंगे, ध्यान दीजिएगा प्लीज. आप सबसे पहले देखिएगा if it is 3D या फिर others. पहले आपने देख लिया क्या, whether you are having D8 या 9, है ना, कितने इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास. नेक्स्ट व्हाट यू नीड टू सी, 3D का मेटल है, 4D का मेटल है या 5D का मेटल. ठीक है. व्हाट यू हैव टू सी, 3D का है, 4D का है या 5D का. नाउ प्लीज सी. नेक्स्ट, अगर आपको दिखा ये 3D का मेटल है, ठीक है, इफ इट इज फॉर 3D. और दूसरा किस सकता है 4D या 5D. अगर 4D 5D का हुआ तो इट विल बी स्क्वायर प्लेनर. कुछ नहीं देखना आपको, इट विल बी स्क्वायर प्लेनर. यू डोंट इवन हैव टू लुक एट द लिगेंड्स. ठीक है. 4D और 5D अगर हुआ देन यू डोंट हैव टू लुक एट एनीथिंग. बस एक चीज आप देख लीजिएगा, 4D और 5D स्क्वायर प्लेनर इफ ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो, +3 हो,
+4 हो, ठीक है। इन सारे ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो जाएगा, इन सारे ऑक्सीडेशन स्टेट में इट इज गोइंग टू बी व्हाट, स्क्वायर प्लेनर, +2 +3 +4। 3D में क्या करना पड़ेगा आपको, 3D में यू हैव टू सी, देन यू विल हैव टू आस्क अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट। ध्यान दीजिए, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, ठीक है, फिर क्या होगा, +2 से ज्यादा है, +3 +4 +3, और इट इज +4, +3 और +4 अगर है आपके पास, if the oxidation state is +3 or +4, then you don't have to look at the ligand, you just need to see, आपको +3 और +4 मिल गया तो ये स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, ठीक है। इफ इट इज +2, then you will have to see the ligand, कि ligand कौन सा है, ठीक है। अब ligand में आपको देखना पड़ेगा ligand कौन सा है, तो ligand में देखिएगा दो किस्म के ligand है, बिफोर वाटर, आफ्टर वाटर, ठीक है। इफ इट इज बिफोर वाटर, और हमने ब्रैकेट लगा दिया ऐसे, ठीक है, इसका मतलब इंक्लूडिंग वाटर है ना। I hope this is known by the people at least who are having maths. Before including water, then it is going to be tetrahedral. और hybridization sp3। आफ्टर में हम बता देंगे, एक सेकंड कंप्लीट कर देंगे स्क्वायर प्लेनर, एंड स्क्वायर प्लेनर हैज dsp2 hybridization। जी बताइए, tell me guys what happened, शाविज आप कुछ कह रहे थे? Can you just repeat this thing? नहीं आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए ना, वो साथ साथ कीजिए, आप बोलिए, ये कुछ तो समझ में आएगा ना। मान लीजिए फ्लो चार्ट किताब में बना हुआ, हमने एक बार एक्सप्लेन कर दिया, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ होगा, ठीक है ना, ऑल ऑफ यू गाइस। इनको अभी समझ नहीं लग रहा है कि नहीं समझ में आया, क्या बना दिया सर ने, तो आप देखिए कुछ ना कुछ आपको समझ में आएगा। सबसे पहले क्या देखना है, टेल मी शाविस, कीप योर माइक ऑन। जिन जिन को समझ में नहीं आया प्लीज कीप योर माइक्स ऑन, जिन जिन को समझ में नहीं आया, बस शाविश को ही समझ में नहीं आया, सबको आया, ठीक है सर। शाविश, हाँ, Yes. एक ही जगह हाथ उठाओ भाई, दो दो जगह हाथ उठाया आपने, ठीक है। देखिए अगर D0 से लेकर D7 तक अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन आया ना, D1 आया, D2 आया, D3 आया, D4 D5, देन इट विल बी ऑलवेज व्हाट, यू डोंट हैव टू लुक एट एनीथिंग ना, Tetrahedral. क्या देखना, टेट्राहेड्रल होगा हमेशा, है ना। अच्छा, और D10 में भी क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल, सही है। Tetrahedral. जस्ट गिव मी अ सेकंड, या माय स्क्रीन इज विजिबल शावेश, Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब D8 और D9 में हमको चेक करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है शावेश। Yes. पहले क्या चेक करेंगे, 3D सीरीज का, 4D सीरीज का, या 5D सीरीज का। आपको ये पता है क्या मतलब है 3D 4D 5D का, Yes, yes. पता है ना, कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में आ रहा है यानी शक्ति विक्रमण फेकोनिकोजन, या फिर इधर नीचे वाले इसमें आ रहा है ना, ठीक है। Yes. तो आपको देखिए, आपको सिर्फ क्या आइडेंटिफाई करना है, वेदर इट इज 3D और नॉट, है ना। 3D तो याद करा दिया ना मैं, शक्ति विक्रमण फेकोनिकोजन। 3D है तब तो आप इधर आ जाइएगा, फिर बाद में चेक करेंगे। अगर 4D और 5D जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लैटिनम है, शक्ति विक्रमण फेकोनिकोजन में प्लैटिनम नहीं आता, देन इट इज गोइंग टू बी स्क्वायर प्लेनर, और ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकालने आपको आना चाहिए। मेक सेंस, यस और नो, प्लीज टेल मी। Yes, sir. अब अगर 3D है तो क्या चेक करेंगे, इफ इट इज 3 देन व्हाट यू हैव टू चेक। Oxidation state. हाँ, क्या ऑप्शन है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकता है, +2 या फिर उससे ज्यादा, दो ऑप्शन है, आइदर इट विल बी +2 और इट विल बी मोर देन दैट। इफ इट इज मोर देन +2 देन इट विल बी व्हाट, स्क्वायर प्लेनर, करेक्ट है। अगर +2 है तो फिर क्या चेक करेंगे, Ligand. लिगेंड। नाउ लिगेंड में दो कैटेगरीज, बिफोर H2O एंड, After. बिफोर H2O विल बी टेट्राहेड्रल एंड आफ्टर H2O विल बी स्क्वायर प्लेनर, मेक सेंस। बिफोर H2O में देखिए हमने जो स्क्वायर ब्रैकेट लगाया ना, इसका मतलब होता है इंक्लूडिंग H2O, ठीक है ना, इंक्लूडिंग H2O। चलिए राइट दिस डाउन, रेज योर हैंड वंस यू आर डन। आप लोग लिखिए जरा, हम आ रहे हैं ना, माय एक्चुअली पेरेंट्स आर लीविंग फॉर मुंबई, सो आई जस्ट नीड टू सी देम ऑफ, ठीक है। इसको लिखिए, यू कैन रेज हैंड, आई विल बी बैक।
Raise your hand if you're done, guys. Okay. Sir, भाई जल्दी लिखो यार, इतना ज्यादा बड़ा भी नहीं है. Raise your hand if you're done, sir, guys. हाँ, Shaviz, tell me. sir, before Esto means the spectrochemical series. Yes, correct. Before H2 मतलब स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में. Okay, sir. Okay.
गाइस एक दो सवाल कीजिए, है ना? Hmm, explain bonding in FeH2O whole 6, 3 positive. Explain bonding. अच्छा, into अच्छा, explain bonding and magnetic character in FeH2O whole 6, 3 positive. ठीक है? So here you have to do very similar things to VBT via with CFT, ना, with the help of CFT, using CFT ऐसे कर लीजिए. So first of all, here you have to calculate the oxidation state. Then after oxidation state, according to the oxidation state, you have to give the electronic configuration. ठीक है? In electronic configuration, you will see that how many D में कितने electrons हैं. And according to the D electrons, then you will determine whether according to oxidation state and electronic configuration, you will determine whether water is strong field ligand or weak field ligand. ठीक है? अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड हुआ तो फिर पेयरिंग होगी, अगर वीक फील्ड हुआ तो पेयरिंग नहीं होगी, एंड उसके हिसाब से फिर डी ऑर्बिटल को वहां पे आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा. ठीक है? सो प्लीज डू दिस, ट्राई दिस वन, है ना? आई विल बी बैक. माय पेरेंट्स आर जस्ट लीविंग राइट नाउ, है ना? Just try doing oxidation state, electronic configuration, and determine whether water is strong field or weak field ligand. Okay, I will be back in 5 minutes.
Thank you for waiting, guys. And did somebody send any answer? Acha. Guys, send me whatever you have done. No? Oxidation state, electronic configuration, weak field or strong field. If you have done anything, please send me on WhatsApp. Oh, nobody. Oxidation state भी किसी ने नहीं निकाला क्या? I think oxidation state must be quite easy, na? Because we are having water. हाँ, अच्छा किसने निकाला है? Yes, yes, Madhya, correct. Oxidation state will be +3. Yes, correct, Faiza. See, Fe, H2 is 0, na? So Fe will be +3. So oxidation state is +3. So what will be the electronic configuration of Fe3 positive? Will be argon. 4s will have 0 electrons because 4s में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं they will be lost, ना? +3 है तो. And Fe का जो इलेक्ट्रॉनिक सॉरी एटॉमिक नंबर है 26, तो D6 का जगह D5 हो जाएगा. 4 is 0 and 3D 5. Yeah, correct, right. 3D 5. Okay. Now Fe3 positive है. So what will be strong field ligand or weak field ligand? In the last class we have done that. Fe3 प्लस है, दैट मीन्स Fe जो आपके 3D सीरीज का एलिमेंट है और पानी है. वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड, टेल मी गाइस. Fe इज 3D सीरीज एलिमेंट, ठीक है ना? और 3D सीरीज में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट और +3 में पानी, वाटर. सी एंड टेल मी गाइस वेदर इट इज स्ट्रॉन्ग फील्ड ligand और वीक फील्ड, यानी कि ऑक्सीजन डोनर. वाटर क्या है? ऑक्सीजन डोनर है ना? सो ऑक्सीजन डोनर्स इन +3 फॉर 3D. इज इट स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड? भाई लास्ट क्लास के में तो कराया था हमने. देखिए गाइस, देखिए. चेक एंड टेल मी फॉर ML6. ML6 में हमने कराया था ना स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड. Sir, weak field. वीक फील्ड पक्का? H2O is a weak field ligand, right, sir? इन जनरल ही वीक फील्ड लिगेंड है. नहीं, देखिए अगर आप ऐसे याद करके देखिए, लोग ना जनरली वैसे बता देते हैं कि पानी से पहले वाला वीक फील्ड और पानी के बाद वाला स्ट्रॉन्ग फील्ड, बट दैट इज नॉट द केस, ठीक है ना? भले ही आपका अभी यहाँ पे आंसर सही है, ठीक है ना? आई एम नॉट सेइंग दैट, बट आपको प्लीज ये चीज याद करनी पड़ेगी, दिस थिंग, कि 3D सीरीज की अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में देखें तो कार्बन एंड नाइट्रोजन डोनर्स आर स्ट्रॉन्ग फील्ड, बाकी सारे वीक फील्ड. इफ यू आर कमिंग टू द आंसर थ्रू दिस पर्टिकुलर वे, अगर आप इस तरीके से आंसर में आ रहे हैं तब तो आपका तरीका सही है, ठीक है? अदरवाइज यू आर गेटिंग द आंसर राइट फॉर ओनली दिस क्वेश्चन. इट मे और मे नॉट बी करेक्ट फॉर द अदर क्वेश्चन. फॉर एग्जाम्पल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट देख लीजिए, ठीक है? सो कोबाल्ट इज 3 पॉजिटिव एंड इट इज 3D सीरीज एलिमेंट ऑल्सो, बट लेकिन कोबाल्ट के साथ अगर पानी आएगा ना तो पानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाएगा. ठीक है रबा? Okay, sir. ओके. तो पानी को इन जनरल आप नहीं कह सकते दैट इट इज वीक फील्ड. आप इन जनरल कह रहे थे कि पानी तो वीक ही फील्ड होता है. टेल मी. Yes, रबा, sir. Yes. है ना? वो टेट्राहेड्रल के केस का अगर आप लेके चल रहे हैं तो प्लीज उसको मत लेके चलिए. दिस इज ML6 मेटल एंड हियर वी आर हैविंग ऑक्टाहेड्रल ना, तो उसको ध्यान में रख के चलिएगा, ठीक है? सो
ऑक्सीजन डोनर है, दैट इज व्हाई इट विल बी योर वीक फील्ड लिगेंड. एंड वीक फील्ड लिगेंड में क्या पेयरिंग होगी या नहीं होगी? टेल मी गाइस, बोलो. देयरफॉर पेयरिंग विल अकर और पेयरिंग विल नॉट अकर? पेयरिंग विल अकर और नॉट अकर? नो. ठीक है, वेरी गुड. देयरफॉर पेयरिंग विल नॉट अकर. पेयरिंग विल नॉट अकर. ठीक है, पेयरिंग विल नॉट अकर. आफ्टर दिस D5 है आपके पास ना, D5 है. सो व्हाट वी कैन से, ठीक है. नाउ इसके बीच here we are having 3D है ना, 5 इलेक्ट्रॉन. दिस इज 4s. देन वी विल बी हैविंग द 3p और उसके बाद 4d. So the hybridization will be sp3d2 and it will be octahedral. और मैग्नेटिक कैरेक्टर की अगर हम बात करें, they are asking about magnetic characters. So since it is having 3d5 and weak field ligand and there is no pairing occurring, we'll say number of unpaired electron 5, meaning paramagnetic. Meaning paramagnetic and high spin complex. Does this make sense, guys? Yes or no? Please tell me. Write this down and raise your hand once you're done. Waiting for Fahad, Madiha, Tarif, Shahid, and Shaviz. Can you please show question for a second? Yeah, sure. Explain bonding and magnetic character in FeH2O6 3 positive using CFT.
Guys, those who are done, please write this question. NiCl4 2 negative is paramagnetic while NiCO4 is diamagnetic, though both are tetrahedral by. Write this question. Waiting for Fahad, Shahid, and Shaviz. Waiting for Shahid and Shaviz. ठीक है, देखिए अब इसी सवाल के ना बहुत सारे आपको जवाब मिल सकते हैं. आई मीन देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ आंसरिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ध्यान दीजिएगा ऑल ऑफ यू गाइस. अगर ये सवाल आपको ना 1 मार्क्स में आ गया, ठीक है, इट इज इन 1 मार्क्स, then you are going to just write one thing, because Cl negative is weak field ligand and CO is strong field ligand. Pairing occurs in NiCO whole 4, making it paramagnetic. ठीक है, ये तो बात तब होगी जब आपके पास सिर्फ 1 मार्क्स में आए. यू आर नॉट गोइंग टू शो द होल कंप्लीट बॉन्डिंग थिंग ना यहाँ पे. ठीक है, नाउ अगर ये सवाल एक नहीं, अगर 2 मार्क्स का भी आया ना, तब आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन चालू कीजिएगा सब कुछ के साथ. ठीक है, अगर 1 मार्क्स में आया तब 1 लाइन लिखना है, 2 मार्क्स में आया तो आपको आधा पेज भी भरना पड़ सकता है. ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस गाइस. In 1 marks, it will be fine if you write weak field ligand and strong field ligand explanation. But if it is in 2 marks, then you have to show all the वो orbital वगैरह सब कुछ दिखाना पड़ेगा. You have to calculate oxidation state and everything. ठीक है, don't have to show कि क्या oxidation state है, but you will have to write that what is the oxidation state यहाँ पे. ठीक है, so please we will see that higher marks में अगर आया तो किस तरह से हम लोग सवाल solve करेंगे यहाँ पे. What will be the Sir, this one line is fixed for type of 1 to question? 2. So here first of all we see. नहीं 1 marks के लिए, सिर्फ 1 marks के लिए. Okay, sir. ठीक है, अगर ये 1 मार्क्स से बढ़ के 2 मार्क्स हो गया ना, तब भी ये वाला लाइन नहीं चलेगा, उसके लिए पूरा एक्सप्लेनेशन लिखेंगे हम. कह रहे. ठीक है, 1 मार्क्स के लिए अगर आया सिर्फ ये लाइन, अगर 1 से ज्यादा का है तो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विल गो लाइक दिस. निकल Cl4 2 नेगेटिव. ठीक है, सो हियर निकल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू हाउ मच? +2. ठीक है, नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की अगर हम बात करें, सो निकल 2 पॉजिटिव. शक्ति विक्रमण फे को नी 28 का मतलब आर्गन 4s2 3d8, राइट, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, सो 4s2 से 0 हो जाएगा, so will be 4s0. Now we are having what? We are having d8. We are having d8 configuration. d8 configuration, and what is the oxidation state? वहां पे d8 configuration है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +2 and 3d सीरीज का एलिमेंट है, and chlorine is weak field as it comes before water. Therefore pairing does not occur. ठीक है, और आपके पास d8 के जो इलेक्ट्रॉन्स है कुछ इस तरह से रहेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना. मतलब देखो, ऐसा नहीं कि पेयरिंग हो गए नहीं भाई, 8 इलेक्ट्रॉन कहीं तो जाएंगे. ठीक है, तो आप लोग इस तरह से मत कर दीजिएगा कि पेयरिंग होगी ही नहीं. मेक सेंस? यस और नो? प्लीज टेल मी गाइस. ठीक है, अब देखिए वी नीड 4. अरे हाँ या ना कुछ तो बोल दो भाई, क्या ही मौन व्रत लग के बैठे सारे कोई. अरे ऐसे मत यहाँ पे लड़ने लगना हमसे कि सर पेयरिंग क्यों करा दिया, पेयरिंग तो होती नहीं है. बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है?
यस फायजा मदीहा। यस रबा। रबा आपको समझ में आया? अरे भाई हाँ या ना कुछ तो बोलो, लिखने में लगे हुए हैं क्या सारे? यस रबा टेल मी। रबा शाहिद। क्या ढीठ बना भाई, आज आप लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे? रबा एम आई नॉट ऑडिबल? Yes, sir, you're audible. Can आंसर you करो ना repeat? भाई। ये समझ, देखो दो चीजें यार, हम ये तो मेरा दिमाग खराब होता है जब आप लोग जवाब नहीं देते हाँ या ना। आप ये बताइए समझ में आया या नहीं आया, उसके बाद मेरा काम। टेल मी गाइस। Sir, can you explain again this last हाँ part? आई विल एक्सप्लेन। हाँ वो हम एक्सप्लेन कर देंगे, देखिए। कीप योर माइक ऑन बट। भाई कीप योर माइक ऑन रबा। Yes, sir. हम एक्सप्लेन। हाँ। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द डी सबशेल? 8. 8, ठीक है। तो 8 भरते हैं, उसके बाद पेयरिंग होगी ना। समझ में आ रही है? जैसे 4 रहते थे हमारे पास, अगर आपको याद हो, हम बोलते थे ना पेयरिंग करेंगे हम लोग। तो हमारे पास 4 रहते थे ऐसे, 1 2 3 4, उसके बाद बोलते थे पेयरिंग भी होगी। पेयरिंग बाद में करते थे, पहले तो 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। समझ में आ रही है? Yes, sir. बस हमने वही ना किया है, 8 इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं हम बताइए। पहले सिंगल सिंगल। Single सही। single उसके बाद 1 2 3 4, अब क्या करें? first one में pairing, second में and third में. हाँ, ठीक है ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। मेक सेंस? Yes, sir. Right, so we are just filled the 8 electrons in D8. We are not doing anything because of water. पानी की वजह से हम कुछ नहीं कर रहे। बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, now let us see NiCO4. Now nickel, the oxidation state, cobalt is, sorry, not cobalt, my bad, carbonyl. Carbonyl is a neutral ligand, so it will be 0, and nickel will be in its neutral state, it will be argon 4s2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3d8. Does this make sense? Yes or no? Please tell me guys. Yes. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से। CO is strong field ligand as it comes after water. Therefore, pairing occurs. Pairing occurs, and और एक चीज जो होती है ना, और एक चीज ये होती है कि the s electrons is shifted to d electrons. 4s electrons is shifted to 3d. देखिए 4s and 3d they have very similar energies, ठीक है। दैट इज वाई आपके पास 4s1 3d5 हो जाता है किसमें? इन द केस ऑफ क्रोमियम। एस इलेक्ट्रॉन जैसे हम लोग एक डी में भेज देते हैं ना फॉर स्टेबिलिटी। Similarly, strong field ligand they come with some type of stability, special type of stability that is due to crystal field splitting. Due to crystal field splitting, वहां पे stability आती है. That is why strong field ligands what they have a tendency to push the s electrons to the 3d if needed, and that's what needed here to make it sp3 tetrahedral. ध्यान दीजिएगा guys. 1 2 3 4 and 5, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास है 4s। तो सबसे पहले 1 2 इलेक्ट्रॉन 4s वाले, फिर 8 इलेक्ट्रॉन D8 में, 1 2 3 4 5 6 7 and 8। नाउ व्हाट विल हैपन? एक तो पेयरिंग तो होगी, दिस इलेक्ट्रॉन विल कम हियर एंड दीज 2 इलेक्ट्रॉन विल गो देयर, ठीक है। सो आफ्टर पेयरिंग ऐसे लिख देते हैं, आफ्टर पेयरिंग ऐसा दिखेगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो डी वाले हो गए। और 9 10 ये हो गया 4s वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नाउ द 4s इज वेकेंट और आगे का p3, ठीक है। तो sp3 इज गॉट टेट्राहेड्रल, और यहाँ पे भी सेम होगा, 4s जो यहाँ पे वेकेंट है एंड फिर आगे का 3p, ठीक है। तो ये हैव s एंड यहाँ पे p ऑर्बिटल, तो ये कितना आ जाएगा sp3, ठीक है। दैट इज टेट्राहेड्रल। सो बोथ ऑफ दीज आर व्हाट sp3 एंड टेट्राहेड्रल, बट एक क्या है, दिस NiCO4 इट इज डायमैग्नेटिक एंड दिस इज पैरामैग्नेटिक। एंड द रीजन इज स्टिल, देखिए यहाँ पे हमने पूरा लिखा है, अदरवाइज द रीजन इज द सेम। ये Cl negative is weak field ligand and carbonyl is strong field. That is why pairing occurs in NiCO4, making it paramagnetic. Make sense? Yes or no? Please tell me, guys. समझ में आ रही है? बोलो भाई हाँ या ना? Yes, sir. Yes, okay.
Yeah, Shavis, tell me. The question of finding hybridization will come from valence bond theory and crystal field theory, or from only देख CFT. नहीं वो देखिए, आपको जो भी है आपको CFT अप्लाई करना पड़ेगा ना, वहां पे वीक फील्ड लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोलना ही पड़ेगा, इवन इफ दे आर सेइंग ना कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से समझाओ, ठीक है, इवन इफ दे राइट इट क्लियरली explain using valence bond theory, then तब भी आप weak field ligand strong field ligand यूज कर लीजिएगा, because I have seen the checked papers of toppers, वो लोग वही लिखते हैं और वो उसमें पूरा पूरा मार्क्स लिख दिया रहता है, ठीक है, इवन इन द मार्किंग स्कीम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लिखने के बाद भी CBSE राइट्स स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है, ओके शावेज। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, meanwhile you guys write this down, तब तक हम I'm looking for a few questions that were asked in this year. Marking schemes. Sir, we don't have to make the isomerism structure of it. What? Isomerism structure, like tetrahedral, Iso- the structure वो for. स्ट्रक्चर नहीं बनी, नहीं स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं। Okay, sir. Sir, here 4s electrons, how are they situated? ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है ना, this cobalt is very strong fielding and that is why it has tendency to shift these two electrons also when needed, ठीक है, जैसे कि क्रोमियम का 24 होता है ना, so the configuration should be argon 4s2 3d4, but it does not happen, right? क्या होता है 4s1 3d5, this only occurs because S4s और 3d के बीच में जो एनर्जी लेवल है ना, इट इज वेरी नियर, दोनों की एनर्जी काफी सिमिलर होती है, दैट इज वाई द इलेक्ट्रॉन कैन गो फ्रॉम S to D, 4s to 3d में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इजी होता है, उतनी ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई द S इलेक्ट्रॉन, क्रोमियम के बारे में बता रहे हैं क्यों जा रहा है, क्योंकि 3d5 ज्यादा स्टेबल है, सिमिलरली क्योंकि कोबाल्ट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है एंड इफ इट ब्रिंग्स sp3 टेट्राहेड्रल तो वहां पे ज्यादा आपके पास स्प्लिटिंग एनर्जी होगी, दैट इज वाई, ठीक है। Okay, sir. अब यही सेम सवाल आया हुआ था, दिस वाज इन 2 मार्क्स है ना, इसको हम जरा देखते हैं दैट हाउ दिस इज व्हाट 1 1 मार्किंग स्कीम 1 1 27th number question, 27th ही था, this 5 1 Sir, can you also explain in-text question 9.8? हाँ आई विल एक्सप्लेन, कैन यू, क्या बात है रवा, आप उनको ऐसे बोलो सर एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन टू मी। Okay, sir. अच्छा नहीं, दिस क्वेश्चन वाज नॉट आस्क्ड, दूसरा सवाल था ये, just see in here. Raise your hand if you're done, उसके बाद ही तो एक्सप्लेन कर पाएंगे ना।
रेडी फॉर मदीहा शावेज। कौन सा सवाल कह रहे थे आप रबा? इंटेक्स क्वेश्चन 9.8. ये आया था क्या आपके टेस्ट लिस्ट में? नहीं सर, ये होमवर्क था एंड मैंने किया है, सो आई गॉट द रॉन्ग आंसर, इसलिए। कोबाल्ट का +3 था, मतलब क्या लिया था आपने स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड में? यही सवाल है ना? यस सर। ठीक है, ध्यान दीजिए जरा। ठीक है, आप लोग वो पूरे फॉर्मेट में लिख लीजिएगा, बट हम ऐसे आपको बता देते हैं। ठीक है, आप देखिएगा कहाँ गलती हुई है आपसे। अगर इसकी बात करें कोबाल्ट की, सो ऑक्सीडेशन स्टेट इट इज इक्वल टू +3। सही? यस सर। ओके, कोबाल्ट +3 में नाइट्रोजन डोनर है ना, लिगेंड इज व्हाट? नाइट्रोजन डोनर। देन टेल मी इट विल बी स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड? देख के बताइए, लास्ट क्लास में लिखाया था हमने नाइट्रोजन डोनर +3 में। व्हाट हैपेंड गाइस? अरे यार, ML6 वाला पार्ट तो बिल्कुल फोकस रखो, उसी में है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। नाइट्रोजन डोनर, Rabba, you were you not present in the last lecture? Yes, Rabba? सर स्ट्रॉन्ग। नहीं नहीं, हम वो पूछ नहीं रहे ना, आपसे पूछते आप थे लास्ट क्लास में? नो सर, लास्ट थर्सडे आई डिडंट अटेंड द क्लास। अच्छा, ओके, हाँ, तो वही दिक्कत आ रही है फिर। आपने रिकॉर्डिंग भी नहीं देखी है? Sir, I forget to ask you because this whole week I have tests in the school, so I'm busy. That's why. अच्छा, तो नाइट्रोजन विल बी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, नाइट्रोजन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो दिस विल बी आर्गन 4s0, शक्ति विक्रमण फे को, शक्ति विक्रमण फे के बाद 26 को 27। So this will be D6 I think, D6. D6 है ना, और पेयरिंग होगी। सो D6 में देखिए पेयरिंग ऐसे होती है, 1 2 3 4 5 6, बिकॉज T2G एंड EG। ठीक है, पेयरिंग ऐसे नहीं कि 1 2 कर देना फिर 3 4 कर देना है, और 4 अगर इलेक्ट्रॉन है तो। प्लीज रिमेंबर दैट यू आर डूइंग द पेयरिंग अकॉर्डिंग टू द T2G एंड EG लेवल्स। ओके, तो पहले 3 भरिएगा, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। मेक सेंस रबा? Okay, sir. ओके, सो यू कैन सी दैट इट इज नाउ आपके पास 2 ऑर्बिटल यहाँ पे हो गए, 4s का 1 ऑर्बिटल हो गया, और इधर फिर p के 3 होकर जाएंगे। सो इट इज व्हाट? इट इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ना, ये Yes, sir. DsP2 D2SP. है। हाँ, D2sp3, माय बैड, D2sp3। अब देखते हैं निकल NS3। सो निकल में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +2 का। +2, sir. हाँ, एंड नाइट्रोजन डोनर, बताइए स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड? +2 में आपको पता नहीं। ठीक है, आप देखेंगे, हम लोगों ने लिखा तो ML6 3D सीरीज में आता है, निकल शक्ति विक्रमण फेकोनिकोजन में आता है। +2 में कौन है? ओनली कार्बन डोनर आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, Okay, sir. So it's weak field again. हाँ, इट इज वीक फील्ड लिगेंड। आई थिंक यहीं पे बस आपकी गलती हुई थी, राइट? Yes, sir. है ना, तो वही NH3 जो स्ट्रॉन्ग फील्ड है यहाँ पे क्या है? Weak field. ठीक है, एंड इट इज वाई, इट इज बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली, मोर और लेस। ठीक है, अभी तो ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब ये चीज ना आपको एनसीईआरटी में दिखेगी नहीं, कहीं नहीं दिखेगा आपको कि ऑक्सीडेशन स्टेट पे कैसे डिपेंड करता है। शक्ति विक्रमण फे को नी, सो आर्गन 4s0 0, एंड 3d8, 8. राइट ना? अब पेयरिंग, नो नो पेयरिंग, राइट? सो 1 3 4 5। ठीक है, सो you'll have 1 2 3 4 5 6 7 8, then obviously it is going to be S P3 E. and D2, है ना? Yes.
So this is inner orbital complex, this is outer orbital complex. Okay. Okay, sir. अब देखिए एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन हम आप लोगों को बताते हैं. इन टेक्स्ट क्वेश्चन you have to do from 9.5 to 9.10. उसके बाद एक सवाल इसका अ, 9.24. ठीक है, 9.24 जरूर कीजिएगा गाइस. ठीक है, एक्सरसाइज 9.24. ठीक है, आप लोग के पास कभी कभी केस ऐसा आएगा ना, एक कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स के अंदर नंबर ऑफ वीक फील्ड लिगेंड इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इटसेल्फ. बाकी सारी चीजें आपने देख ली, ये ऑक्सीडेशन स्टेट और नाइट्रोजन डोनर, कार्बन डोनर, उस हिसाब से. लेकिन वहां पे दो लिगेंड्स है, वीक फील्ड भी है, स्ट्रॉन्ग फील्ड भी है, और दोनों के नंबर बराबर है. तो आप स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले को क्या दीजिएगा, प्रायोरिटी दीजिएगा एंड पेयरिंग करा दीजिएगा. ठीक है, पेयरिंग वाला कर. नाउ अब ये सवाल अभी तक सिर्फ आपके एनसीईआरटी में इन में कभी भी इस तरह का सवाल नहीं पूछा गया है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड को साथ में रखा गया. ठीक है, बोर्ड्स में मेरी बात मानी थी. या नहीं तो फिर आप पेपर देखिए, पेपर में जो सवाल होता है बहुत आसान आएंगे आपके पास. ठीक है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट.